हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग कॉचीज रूट टेस्ट एंड डी एलम्बर्ट्स एंड कंपैरिजन टेस्ट का जो कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। उसके बाद डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का प्रूफ स्टेटमेंट एंड के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो कॉचीज रूट टेस्ट में जो फर्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज रूट ओवर 1/2 क्यू प्लस वन प्लस रूट ओवर 2/3 क्यू प्लस रूट ओवर 3/4 क्यू प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये एक सीरीज है। तो इसमें nth टर्म पहले निकालना है। हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, तो उस हिसाब से nth टर्म में ऊपर में रहेगा n। और इसमें हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में एक जैसे ऊपर जो टर्म है उससे एक टर्म ज़्यादा है, मतलब n रहेगा, तो इसमें हम लोग n+1 लिख सकते हैं, राइट। और पावर सब में 3 है तो इसमें भी पावर 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दैट इज इसमें रूट ओवर n डिवाइडेड बाई, इसमें हम लोग n कॉमन लेंगे तो n³ डिवाइड 1+1/n होल क्यूब, राइट। दैट इज n और n³ तो 1 इसमें आ जाएगा 1/n² इंटू 1+1/n होल टू द पावर 3, दैट इज 1/n इंटू 1+1/n होल टू द पावर -3/2। तो एक बाइनोमियली इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, 1/n इंटू 1-3/2 इंटू 1/n एंड सो ऑन, राइट। तो इसमें हम लोग एक vn टर्म एज्यूम कर लेंगे। लेट vn इक्वल टू 1/n। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगा, लिमिट 1/n कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा सिर्फ 1-3/2 इंटू 1/n एंड सो ऑन। तो 1/n तो टेंस टू जीरो, ऐसे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसका रिजल्ट आएगा 1, दैट इज ए फाइनाइट वैल्यू। तो सिंस vn क्या है, समेशन ऑफ vn, सिंस समेशन ऑफ vn दैट इज समेशन ऑफ n 1/n, पावर n का पावर क्या है 1, इज डाइवर्जेंट, क्योंकि पावर जब लेस देन 1 होता है देन इट इज कन्वर्जेंट, इज डाइवर्जेंट। Therefore, according to comparison test, we can say that summation of un is also divergent, right। तो इसमें समेशन ऑफ un भी डाइवर्जेंट हो रहा है। और एक एग्जांपल देखते हैं कंपैरिजन टेस्ट का। एग्जांपल 1/2 प्लस √2/3 प्लस √3/4 प्लस डॉट 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 प्लस √n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ओ सॉरी 3 के बाद 8 है, 4 नहीं 8 होगा ये, और n स्क्वायर -1 एंड सो ऑन। तो लेट un का वैल्यू क्या है, दैट इज n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n√n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर -1। तो इसमें हम लोग एक vn एज्यूम कर लेंगे। लेट vn हियर, सॉरी इसमें हियर un इक्वल टू, लेट vn एज्यूम करेंगे। vn एज्यूम करने का टेक्निक क्या है, n का पावर लेना है, n का पावर लेंगे, सिर्फ हाईएस्ट पावर लेंगे। न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर है हाफ और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 2, तो माइनस हो जाएगा जैसे डिनोमिनेटर में है, तो n टू द पावर -3/2 दैट इज 1/n टू द पावर 3/2, तो 1/n टू द पावर 3/2।
राइट। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un by vn, that is limit n tends to infinity root n into n square minus 1 और डिवाइडेड बाई वी एन, दैट इज ये हो जाएगा n टू द पावर 3/2, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर 3/2 प्लस हाफ, दैट इज n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, limit n tends to infinity 1 divided by 1 minus n square, that is 1. Now since summation of vn क्या है, summation of 1 by n to the power 3/2, since power is greater than 1 then it is convergent, therefore summation of un is also convergent, right. तो समेशन ऑफ यूएन भी कन्वर्जेंट हो रहा है. नेक्स्ट एक थियोरी देखते हैं कि डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, उसका स्टेटमेंट एंड थ्योरम. डी एपोस्ट्रोफी एलेम्बर्ट्स, ये साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन एलेम्बर्ट. रेशियो टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट. क्या स्टेटमेंट है थ्योरम का स्टेटमेंट? for a series summation of un, let limit n tends to infinity un plus 1 by un equal to l, राइट. इसमें भी ऑलमोस्ट, इसमें भी सेम रिजल्ट है कि जब एल का वैल्यू लेस देन कॉचीज रूट टेस्ट की तरह कि एल व्हेन एल लेस देन 1 इट इज कन्वर्जेंट, व्हेन एल ग्रेटर देन 1 इट इज डाइवर्जेंट. दैट इज इफ नंबर 1 एल लेस देन 1 the series is convergent, right. Number 2 l greater than 1 the series is divergent, and number 3 l equal to 1 the test fail, then test fail मतलब ये डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इज नॉट सक्सेसफुल फॉर दिस, राइट. तो डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में कब हम लोग यूज करेंगे? जब डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में इन जनरल जब टर्म जो है फैक्टर फॉर्म में रहेगा, फैक्टर फॉर्म में जैसे 1 into 2 into 3 2 into 3 into 4 ये फॉर्म में रहेगा, तब हम लोग डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज करते हैं इन जनरल, राइट. तो पहले डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का कुछ एग्जांपल देखेंगे और उसका जो प्रूफ है
प्रूफ भी हम लोग देखेंगे कि कैसे डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का प्रूफ होता है, राइट। नेक्स्ट प्रूफ। प्रूफ ऑफ डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। सपोज एल ग्रेटर देन वन, हम लोग पहले एल ग्रेटर देन वन, अच्छा एल लेस देन वन, पहले केस वन, तीन केस है तो केस वन, तीन केस अलग अलग प्रूव करेंगे। केस वन, केस वन, सपोज एल लेस देन वन, एल लेस देन वन। अच्छा, इसका और एक स्टेटमेंट है यू एन प्लस वन बाई यू एन, और एक फॉर्मूला के उल्टा कर देंगे, दैट इज सपोज ऐसे भी लिख सकते हैं, यू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन, यू एन, यू एन बाई यू एन प्लस वन इक्वल टू एल, देन number one, L greater than 1 implies convergent, number 2, L less than 1, this implies divergent, number 3, L equal to 1, test fail। तो हम लोग ये पार्ट जो है इसको प्रूव करेंगे, राइट। तो लिमिट here limit n tends to infinity un divided by un plus 1 equal to L, right, un divided by, and L greater than 1, L 1 से ज़्यादा है, तब क्या होगा, then we can choose there exists epsilon and there exists epsilon such that L minus epsilon greater than 1, L minus 1 and epsilon greater than 1, right. Let L minus epsilon equal to R greater than 1. Now since limit n tends to infinity un divided by un plus 1 equal to L, this implies L minus epsilon less than un divided by un plus 1 less than L plus epsilon for any value of n greater than equal to m as per limiting condition. Then we can say therefore un divided by un plus 1, it should be greater than L minus epsilon from first inequality for all values of n greater than equal to m. Therefore un by putting n equal to m, suppose n का वैल्यू m हो सकता है, m plus 1, m plus 2 and so on, and last में p minus 1, then we have um divided by, इनके जगह पे हम लोग पहले m पुट करेंगे उसके बाद m plus 1, तो क्या मिलेगा um plus 1 that is greater than L minus epsilon, similarly um plus 1
divided by um plus 2 greater than L minus epsilon and so on. और लास्ट में डॉट 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 लास्ट में u p माइनस 1 अप टू u p pth टर्म तक करेंगे, दैट इज L माइनस एप्सिलॉन. जितना भी टर्म है इसको हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी गेट um मल्टीप्लाइंग the corresponding side, sides we have corresponding साइड मतलब लेफ्ट साइड के साथ लेफ्ट साइड और राइट साइड के साथ राइट साइड. तो um प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा इसमें, उसके बाद um प्लस 2 ऐसे कैंसिल होके um बाई up that is greater than L minus epsilon whole to the power how many times p minus m. This implies up should be less than um into L minus epsilon whole to the power m minus p, राइट. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि up लेस देन um into L minus epsilon whole to the power m into L minus epsilon whole to the power minus p. Now putting um into L minus epsilon whole to the power m equal to lambda, we have up equal to up less than, इसके जगह पे हम लोग लैम्डा से रिप्लेस कर रहे हैं, लैम्डा इंटू L minus epsilon whole to the power minus p for all values of p greater than equal to m plus 1. Now we have lambda minus L minus epsilon is equal to small r, then we can rewrite is in this form lambda into r to the power minus p, right, where r equal to L minus epsilon that is greater than 1. But the series summation of r to the power minus p जब r greater than 1, हाँ, तो is a GP series, is a geometric progression series with 1 by r that is less than 1. This implies summation of r to the power minus p is convergent, right. This implies summation of up is also convergent, according to comparison test, convergent, right. तो जब फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, अभी सेकेंड केस 2. Suppose for limit n tends to infinity un by un plus 1 equal to L. Suppose L less than 1, है, then there exist epsilon such that L plus epsilon, उसमें नेगेटिव टर्म लिए थे, इसमें पॉजिटिव टर्म, L plus epsilon
should be less than 1, right? तो हम लोग एल प्लस एप्सिलॉन को दूसरा एक टर्म से डिनोट करेंगे. लेट एल प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू के, राइट? so that k should be less than 1. Now limit n tends to infinity, un by un plus 1, that is equal to L, right? That is equal to L. This implies we can say L minus epsilon less than un by un plus 1 less than L plus epsilon for any value of n greater than equal to m. तो उसमें नेगेटिव टर्म कंसीडर किए थे, हम लोग इसमें पॉजिटिव टर्म कंसीडर करेंगे. दैट इज this implies second inequality, that is un by un plus 1 greater than L plus epsilon. Same technique, putting n equal to, पहले m पुट करेंगे, उसके बाद m plus 1 m plus 2 dot 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 p minus 1 we have जब पहले इसमें कितना तक लिए थे, p माइनस 1, ठीक ही है, p माइनस 1 तक लेंगे तो वी हैव सेम एंड क्या मिलेगा, पहले u m डिवाइडेड बाई u m प्लस 1 गेट लेस देन L प्लस एप्सिलॉन um plus 1 by um plus 2 less than L plus epsilon and so on. लास्ट में up plus minus 1 by up less than L plus epsilon, multiplying the corresponding sides we have um divided by up less than L plus epsilon whole to the power m minus p, right? Sorry, p minus m, right? So we have, this implies up should be greater than um into L plus epsilon whole to the power m minus p. तो इसको हम लोग सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं, up greater than um L plus epsilon whole to the power m into L plus epsilon whole to the power minus p, right? तो let um into L plus epsilon whole to the power m इक्वल टू अल्फा. पहला पोर्शन में हम लोग कंसीडर किए थे उसको लैम्डा से, इसमें अल्फा. देन up ग्रेटर देन अल्फा इंटू L प्लस एप्सिलॉन होल टू द पावर माइनस p, राइट? तो L प्लस एप्सिलॉन मतलब क्या है, L प्लस एप्सिलॉन ऑलरेडी हम लोग एज्यूम किए k, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं up. This implies up greater than alpha k to the power minus p, right? Where k equal to L plus epsilon already assume कर चुके हैं. Since summation of 1 by
k to the power p is a GP series, is a geometric progression series with 1 by k greater than 1. This implies summation of 1 by k to the power p is divergent, right? जब ये divergent है तो summation of this implies summation of un is also divergent, right? Last case, that is case 3, जब l का वैल्यू इक्वल टू 1 है. केस 3, the test fail for l equal to 1. Now statement क्या था? limit n tends to infinity un by un plus 1 equal to l. ये statement था. We can neither definitely assert that the certain un by un plus 1 less than positive quantity or negative quantity. ये टेस्ट ये प्रूव करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग वेदर इट इज़ ग्रेटर देन और लेस देन ऐसे कोई कंक्लूजन हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है? इसलिए टेस्ट फेल है. तो वी कैन neither definitely assert that after a certain stage un by un plus 1 is less than a positive number, than a positive quantity which is itself less than 1 nor can definitely assert that un by un plus 1 greater than 1 is greater than 1, ठीक है? तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लिख सकते कि ये इनकॉन्क्लूसिव है, इसलिए ये इनकॉन्क्लूसिव है. तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल, वेदर by which condition it is convergent. सपोज एक एग्जाम्पल है कि सीरीज है 1 प्लस 2 टू द पावर p बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 टू द पावर p बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 4 to the power p by 4 factorial and so on.
तो इसमें यू एन का वैल्यू क्या है, दैट इज इसमें फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, तो इन टर्म में n टू द पावर p बाई n फैक्टोरियल होगा, और यू एन प्लस वन दैट इज n प्लस वन होल टू द पावर p बाई n प्लस वन फैक्टोरियल, राइट। नेक्स्ट क्या स्टेप है, लिमिट निकालना है, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बाई यू एन प्लस वन, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन मतलब n टू द पावर p डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और यू एन प्लस वन ये हो जाएगा n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस वन होल टू द पावर p, that is limit n tends to infinity, इसमें n प्लस वन n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, दैट इज n प्लस वन इंटू वन प्लस वन बाई n होल टू द पावर p, राइट। एज n टेंस टू इन्फिनिटी दिस वैल्यू वन बाई n जीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन वन, इन्फाइनाइट मतलब ग्रेटर देन वन। तो जब l का वैल्यू ग्रेटर देन वन है, द सीरीज इज कन्वर्जेंट, hence the series is convergent। तो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेबिस टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।